Hello guys, welcome back to another video, and in today's video we're going to solve this problem, which is max points on a line. Okay, it's a hard problem. अब इसको start करते हैं. And first of all, given an array of points where points I equals to xi comma yi represent a point on the xy plane, return the maximum number of points that lie on the same straight line. So what we have to do is basically we are given a line. Basically we are given a points. We have to check whether how many maximum points are on the line, and we have to return the number of points. For example, this is the input like 1 1 2 2 3 3. Wait, let me take it. Okay, just paste it here. Now can we see one thing here between the points, like 2 points lie on a same line. First of all, if there are 2 points, it will always lie on the same line, right? I mean, 1 point here, 1 here, 2 points will always lie on the same line. But if we have to check 3 points, 1 2 3, for example, if 1 point, 2 point always lie. I hope you know this. But if we have to check 3 points, for example, this and this point, okay, not this one. Now the points will not lie on the same line. Like this is a line, but it doesn't lie here. But what if the third point also lies on the same line, and that will be done how? Now 3 points are on the same line, and guys, this is a straight line. Okay, I hope this is clear. It's a straight line basically. Okay, so can we say one thing, that all the points lie on the same line when their slope is equal? Like if their slope are same, then it lies on the same plane. For example, this, if here we see the slope, for example, we choose our point this and we check slopes. For this, like 1 1 is the reference point. If we check the formula for slope, for checking the slope is basically y2 minus y1 upon x2 minus x1. So here the slope is equals to 1. Okay, we write here. Then from 1 1 and 3 3, we again do 3 minus 1 upon 3 minus 1 equals to 1. So there are 2 points. Can we say there are two slopes which are equal to 2 points? But these two lie on the same line. But here in the problem it's given 3, because we have to tell the number of points. Now 1 1 also lies on the same line, right? So we'll add 1. So it's 3. Okay. Now I'll show you how are we dealing with this one separately. How we'll deal with this thing by using the concept of some duplicate, that I'll show you. And I think let's just start, and it will be more clear that way. And yeah, let's just start. First of all, n equals to length of points, and if n is less than equal to 2, then return n, right? Now let's make answer equals to 0, and now let's, for I in range n, okay, now we'll take x1 comma y1 equals to points of I, and we'll use a dictionary for it to store the slopes. And one more thing, we'll use duplicate here to add the point itself and the duplicate point. And why I have used the hash map here, duplicate, why not before this loop? So basically, like in if we use it before the loop, what will happen is we'll repeat the missing, we'll repeat the values, right? Once again, yeah, it's clear now. We'll repeat the values for every point. For every point, we'll make a whole slope hash map, and we'll check which like will in the hash map we'll make slope, the keys, the slope key and its value. For example, the value of the slope is coming 2. Then what I'll do, I'll make a key 2 and then check how many times it is repeating, right? That is the whole point here. And why I've taken it inside the this I loop, why not before it? Because the values can be same, can be identical. Okay, how if you just try to solve this
example, you'll get to know it. Okay, now j in range I plus 1 comma, and now x2 comma y2 equals to point j, and okay, now we'll define dx equals to x2 minus x1, dy equals to y2 minus y1, and simply, yeah, if dx equals to 0 and dy equals to 0, then probably there are same points, right? So that's why we use duplicate. So we'll just do duplicates plus equals to 1, and if only dx equals to 0, now we have to also handle why did I do this x1 x2 then dx dy, why not directly do x2 upon, just because we don't want to divide it by 0, right? So if dx equals to 0, then I'll do slope equals to uh, wait, let me just name it slopes for better understanding. Yeah, now slope equals to infinity, and okay, else slope equals to dy by dx, simple, right? Okay, now we also want to add the slopes in the hash map, right? So if slope in row in slopes, right, and if it's not there, then simply slope make it the first one, right? Yeah, okay. And max point, we need another variable which can keep the value of duplicates. Okay, yeah, now we have to check for count in slope dot values. Okay, and max underscore point is to and count plus. Basically, why I'm doing this thing, first of all, we are keeping the this thing in a variable, we are keeping the value of duplicate. Now for count in slopes dot values, basically हर एक slope की value, मतलब कौन सी slope कितनी बारी आई है, तो मैं उसको आराम से रखा हुआ है मैंने साइड में, ठीक है, और डुप्लीकेट भी रखा है, और मैं वो जो स्लोप्स आई है ना वो काउंट के अंदर है, स्लोप डॉट वैल्यूज मतलब स्लोप की जो हैश मैप है उसके अंदर वैल्यूज पर आइटरेट कर रहा है, वो मैं स्लोप से मतलब भी नहीं, हमें बस वैल्यूज पे मतलब हमें ये बताना है कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं काउंट प्लस डुप्लीकेट्स क्यों कर रहा हूँ, काउंट प्लस डुप्लीकेट इसलिए कर रहा हूँ कि ये स्लोप इतनी बारी आ चुकी है। अब डुप्लीकेट बेसिकली कि भाई वो पॉइंट अगर बार बार आ रहे हैं तो उसको भी तो हमें ऐड करना है, तो इसलिए वो कर रहा हूँ, सिंपल मैथ, राइट। नाउ आई डू आंसर equals to max of answer comma max point, and I hope कहीं भी yeah, so got accepted. Yeah guys, so it got accepted and I hope it is clear। मैं फिर भी एक बार आराम से समझा देता हूँ। हमें ना ये बताना है कि कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं लाइन पे, और जैसे ये लाइन है, अब इसके अंदर 1 2 3 4 कर रहे हैं, ठीक है, बट ये 5 और 6 पॉइंट नहीं कर रहे, तो मैंने कोड में यही करा है, अगर 2 पॉइंट है या उससे कम है तो रिटर्न एन कर दो, क्योंकि भाई 2 पॉइंट हमेशा लाइन पे लाई करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है।
अब उसके बाद मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज एन, उसके बाद x1 y1 मैंने 2 पॉइंट्स निकाल लिए, और हमें लिस्ट के अंदर ऐसे ही दे रखे थे, लिस्ट के अंदर लिस्ट दे रखी थी जिसके अंदर 2 पॉइंट्स है। तो ये तो सिंपल मतलब पाइथन की सिंटेक्स वगैरह है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, यही स्लोप, फिर मैंने दूसरे पॉइंट, मैंने एक पॉइंट को रेफरेंस माना, पहले लूप में एक पॉइंट को रेफरेंस माना कि भाई ये पॉइंट से मैं सबको नापूंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने स्लोप्स जो है वो आई लूप में लिखी है, ऐसे बाहर नहीं लिखी, क्योंकि अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट अलग हो जाएगा तो स्लोप बहुत अलग हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ये है तो स्लोप ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, समझ रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ही है तो स्लोप की तो लिटरली फट जाएगी, मतलब अलग हो जाएगा। तो मैंने ये यूज करा, और डुप्लीकेट इसीलिए बेसिकली अगर सेम पॉइंट बार बार आ गए तो उसको भी ऐड करना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने ये बस थोड़े एज के मतलब ये हैंडल करा, स्लोप इन्फिनिटी 0 और ये सब। फिर उसके बाद मैंने डुप्लीकेट को स्टोर कर लिया, और मैंने ये कंपैरिजन इसलिए करवाया कि मतलब डुप्लीकेट को इसलिए स्टोर करवाया कि क्या पता अगर मेरे पास क्या पता डुप्लीकेट पॉइंट्स ही इतने हो कि जो एक पर्टिकुलर स्लोप आई है उसकी वैल्यू कम है, लेकिन डुप्लीकेट पॉइंट ही बहुत है, तो मेरे को वो भी तो आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें मैक्सिमम बताना है। तो बस ये थी प्रॉब्लम, एंड आई होप इट इज क्लियर, आई होप तुम समझ आई हो, एंड कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है। थैंक यू गाइस।